Hey everyone, have you ever been in a situation where you have to say no to someone and you just end up saying yes because you don't know how to say no and think that, oh, maybe this person is gonna think bad about me, or I don't have a choice. Let's just say no right away. Sorry, I mean, not say no right away. And have you ever been in a situation where you don't know how to accept a no for an answer? Like, how the hell did this person say no to me? I can't believe they said no to me. Ah, my day is ruined AF. Yes, we all go through such situation, and a lot of times it has been shown in the studies that it takes a lot of stress and toll on our mental health. That's why today we're going to discuss on the topic how to say no and accept no for an answer. And I'm so happy to discuss this topic with one of the most inspiring person in my life right now, who is a great author and a personality and relationship development coach. And her books, A Girl That Had to Be Strong and Broken is the New Beautiful, has truly opened new doors for women into thinking how women can empower. And I can't wait for her new book, which is going to be publishing soon. And I can't wait to have her. She is none other than Garima Pradhan with us today. Let's welcome her. Hey Garima, great to have you here. Hi, Anjali. I'm so excited to be here and thank you so much for inviting me to your wonderful platform. Yeah, and thank you so much. We are truly grateful to have you here. Now, not wasting any more time of the audience, I'll be starting with the topic. So, the topic is divided in two parts as described earlier: how to say no and how to accept no for an answer. The former will be discussed with by me, and the later will be discussed by Garima ma'am. So, yeah, moving ahead. Now, here are the things that we need to consider while saying no to someone. The first and very foremost thing is place your words well. आपको सही तरह से सामने वाले को समझा बुझा के उसको ना बोलना चाहिए. ऐसे नहीं कि किसी के मुंह पे यूं ही ना बोल दिया, लाइक नो 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 नो, ऐसे नहीं होता है. You have to explain the person in the right manner why you are saying no, because when the other person has a clarity over it, things are not messed up for both of you. So place your words right and place your words well. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई काम दिया गया है और आज आपका स्ट्रेस ज्यादा है या आपके पास ऑलरेडी ओवरलोड है और आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो पहले उनको आप बता सकते हैं कि जी, क्या ये काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या ज्यादा अर्जेंट है. टुडे आई हैव दिस अदर थिंग टू डू, सो इज इट ओके इफ आई डू इट मे बी टुमारो और आफ्टर सम टाइम. वो खुद ही समझ जाएंगे कि आप लोडेड हैं, सो they will understand this is a kind of no for an answer. Second point is that एक अच्छा खासा सैंडविच तैयार कीजिए अपने आंसर का. प्लेस गुड थिंग्स, देन द टफर बैड थिंग्स इन द मिडिल, एंड देन अगेन एंड इट विद अ गुड थिंग. लाइक ओके, आज आपको किसी पार्टी में नहीं जाना है, तो आप पहले अपने फ्रेंड को बताइए कि हाँ, आई नो, आई वुड रियली लव टू डांस इट out with you at the party today, but I'm so exhausted to actually lose all that calorie today, and yeah, it would be really fun to do it some other time. So that's a good way of placing your words and saying no with a good sandwich kind of plot, which we all like to eat, by the way. Agreed. Third point which I feel yeah, third point which I think is definitely that be transparent about whatever it is, not in a cruel rude way but in a nice way. Like okay, ये है तो है, अभी इसी की वजह से हमसे नहीं हो पाएगा. It's fine to be transparent and realistic about it. And lastly, I think जब हम सोचते हैं कि हम किसी को ना बोलने वाले हैं, हम सोचते हैं सामने वाला डिफेंसिव होने वाला है, वो पूरी तरह से हमें इमोशनली ब्लैकमेल करेगा या रॉक झाड़ेगा या फिर जिद करेगा. बट भाई अब हम ना करेंगे तो ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ये गलत है.
So we should not just frame things in our head, क्योंकि वो हमारे लिए चीजें difficult बना देता है. We start over analyzing things and then we just end up saying yes and then we end up being exhausted. So yeah, this is how you can say no and you should not say no. Well, now Garima will take over and explain how to accept no for an answer. Over to you, Garima. Okay. So, guys, how to accept no? This is something like it's very difficult to accept a no, especially जब आपको बोला जाता है, क्योंकि हमें लगता है यार सामने वाला जब मेरे को इतना मानता है, मेरी इतनी वैल्यू करता है, तो मेरी बात को ना तो नहीं कहेगा. लेकिन ये धारणा ही गलत है हमारी, क्योंकि हम पहले से अज्यूम करके बैठे हैं कि सामने वाला हमारी हमसे ना कुछ चीज के लिए ऑलवेज यस बोलेगा, क्योंकि हमने ऐसा पहले ही मान लिया है कि हमने उसको हर तरह से विन किया है, मेंटली, इमोशनली. सो वी फील दैट सामने वाला मना नहीं कर सकता. बट this can really happen in real life because it is real life, it's not real. So real life में नो तो बस लोग बोल ही सकते हैं, बट कोई अगर हमें नो बोलता है तो हमें से एक्सेप्ट कैसे करना है, इट्स ऑल अबाउट दैट टुडे. ओके. तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है दैट नो वन ओज यू एनीथिंग एक्सेप्ट यू. ठीक है. आपको कोई भी इंसान कुछ भी ओ नहीं करता एक्सेप्ट आप. ठीक है. सिर्फ आप अपने लिए जिम्मेदार हैं, पूरी दुनिया आपके लिए जिम्मेदार नहीं है. ठीक है. So don't crib that things are not going my way because it will never go your way. That's life. Life is unpredictable and it is not predefined. ठीक है. Second, you need to detach yourself from the consequences of the person saying no. Because अगर हम ऐसा सोचेंगे कि यार सामने वाला नो बोल रहा है मतलब दे आर अटैकिंग मी, तो मुझे कुछ उसे बोलना है. लेकिन हर जगह आपको बोलना नहीं होता है, कुछ जगह आपको सिर्फ समझना होता है दैट ठीक है उसके कुछ रीजंस होंगे, उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा, इट्स फाइन, सामने वाला मना कर ही सकता है, एंड इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम. ठीक है. तो शिफ्ट दैट फोकस. एग्जैक्टली. तो आपको वो फोकस शिफ्ट करना है. डोंट सेंट्रलाइज द वर्ल्ड अराउंड यू कि ओके पूरी दुनिया मेरे आसपास घूमती है, ऐसा नहीं है. ठीक है. दुनिया तो बिना आपके भी घूम रही है. सो डोंट हैव दैट नोशन दैट सब चीजें मेरे साथ ही हो रही है. इट्स नॉट लाइक थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू, it's not happening to you. Okay. Third, don't take no as a personal attack and don't treat it as a sign of disrespect. एक प्रॉब्लम जो है ना जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज हमारी जो सीनियर जनरेशन हमसे ऊपर, उन्हें ये खासकर हमारे प्यारे पेरेंट्स एंड एवरीबडी अराउंड हु आर इन अ सीनियर पोजीशंस टू अस फील दैट अगर हम उनकी किसी बात का मान रखना चाहते हैं तो हमें हाँ ही बोलना है. बट दे डोंट रियलाइज कि हम उस बात का हाँ में जवाब ना देके भी उनका मान रखते हैं. बट दे एक्सपेक्ट दिस कि योर आंसर शुड ऑलवेज बी यस, बट दैट इज नॉट ट्रू. क्योंकि कुछ जगह हम उनसे डिसएग्री कर ही सकते हैं, एंड डिसएग्रीमेंट इज नॉट डिसरिस्पेक्ट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जस्ट बिकॉज किसी बात में आपको पेरेंट्स को लगता है यार पहले का जमाना अच्छा था, बिना फोटो देखे शादियां होती थी, आजकल तो बच्चे फोटो देख के शादियां करते हैं और स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट करते हैं, तो ये जमाना गलत है. लेकिन हम यहाँ डिसएग्री करेंगे. क्लियर डिसएग्रीमेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट वी फील दैट आवर वे इज बेटर एंड मोर रिफाइंड देन द प्रीवियस वन. तो हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट हैविंग अ प्योर डिसएग्रीमेंट. सो आपको ये चीज समझनी है कि कोई अगर आपको मना कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इज्जत नहीं करता. इट्स जस्ट दैट कि सामने वाला इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको अभी ओबे करे. ठीक है. बिकॉज हमारी जनरेशन ओबे वाली नहीं है. वी आर द फाइन जनरेशन दैट इज ट्रेन्ड इन डिसओबेइंग. ठीक है. सो दैट डज नॉट मेक्स अस डिसरिस्पेक्टफुल. It's just that we are little rebellious to some things and we are not accepting some things the way it has been traditionally. But that does not make us any less than the previous generation. It's just that this change was necessary, and we are in that friction generation because the coming generation will be more rebellious than us. We are just the first step people, and they'll be the like second mountaineers. So they'll be like even more We rebellious. have to prepare. Yeah, it's on us. We have So to prepare for the no. actually, so that is how, guys. Okay. And
fourth point that you have to remember is keep your cool. And when somebody says you no, say it's okay with a smile. Don't be like, don't have those faces, and don't do that mean words, you know, don't do that. Don't play that dirty game, because that is not how you should react. And restrict yourself from criticizing, manipulating, guilt tripping, gaslighting, and even convincing, and most importantly, blackmailing that person by saying mean words to make them say a yes. Don't do that, because if they don't have the freedom to disagree with you, sooner or later they will disappear from your life and choose to not be with you. So the freedom of saying a yes or no has to be there without a doubt, because if that is compromised, everything is compromised. Okay, so just don't do that. If somebody says you are no, treat it as okay, it's their opinion, it's fine. What was mine opinion was mine. So we can definitely have different opinions, and that does not make us any less than them, or make them less than us. Okay, so don't have that mindset. I hope I could convey you this in a very clean format, that how to accept a no. Yeah, that was very, very insightful and clarifying it in aspect of how we can accept the no, Garima. So thank you so much for being here, and thank you so much everyone to listen to us. And I hope this video helps you as much as it has helped both of us. Just discussing about it got us so much clarity in life. So yeah, Absolutely. I hope you all got some help through this, as that is the point. And yeah, share your insight, share the situations, awkward situations, great situations, not good situations, where you have to say no in the comments. And yeah, and like, share, and share with the friends who actually need how to learn to say no and accept the same for an answer. And yeah, keep sharing, keep throwing us with your love.